सीतारमण वित्त मंत्रालय से निकली थी और संसद भवन पहुंची थी, जहां पर मोदी कैबिनेट की बैठक चल रही थी। बैठक में इस बजट को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इससे पहले वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंची थी और द्रौपदी मुर्मू ने भी उनको मंजूरी दे दी। उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक ने इसको हरी झंडी दे दी। तो कुल मिलाकर अब समय 15 से 20 मिनट का शेष रह गया, उसके बाद बजट पेश होना है। बजट में सबकी निगाहें बनी हुई, क्या कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है, क्योंकि अंतरिम बजट है, पूर्णकालिक बजट नहीं है। ज्यादा उम्मीदें भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उम्मीदें हैं वो खत्म नहीं होती हैं, उम्मीदें तो उम्मीदें ही हैं। तो पहला जो अंतरिम बजट था साल 2019 का मोदी सरकार का, उसमें भी कई बड़े ऐलान हुए थे, इसलिए उम्मीदें लोग लगाए बैठे हैं कि इस अंतरिम बजट में भी कहीं ना कहीं बड़े ऐलान हो सकते हैं। आप जब 2019 में जब मोदी सरकार का पहला अंतरिम बजट पेश हुआ था, उसमें क्या बड़े ऐलान हुए थे वो भी आप समझ लीजिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की उस अंतरिम बजट में, और 6,000 रुपए साल में जो किसानों को दिए जाते हैं, उसके बाद रेलवे का बजट बढ़ाया गया, युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान हुए। तो इस बार भी किसान उम्मीद कर रहे हैं कि उस अंतरिम बजट में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी, तो इस अंतरिम बजट में कहीं ना कहीं इस सम्मान निधि योजना की जो धनराशि है उसको बढ़ाया जा सकता है। हालांकि 6,000 से 9,000 होगी या 12,000 या फिर 6,000 ही रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बजट पेश करने से पहले सीतारमण ने मंजूरी ले ली है और मंजूरी के बाद कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी संसद भवन में मौजूद हैं। बस इंतजार हो रहा है कि किस वक्त निर्मला सीतारमण जो हैं वो अपना मोदी सरकार का कह सकते हैं अंतरिम बजट पेश करेंगे। ये छठी बार ऐसा मौका है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रह चुके इंदिरा गांधी, उन्होंने भी बजट पेश किया है। दूसरी ऐसी महिला हैं जिनके नाम रिकॉर्ड होने जा रहा है कि सबसे ज्यादा बार वो बजट आज पेश करेंगी। छठी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। अगर बजट पेश करने की बात की जाए, वित्त मंत्रियों की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा मोरारजी देसाई के नाम वो रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा उन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। उसके बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के भी नाम है, एक रिकॉर्ड है, उन्होंने 9 बार बजट पेश किया है। इसके बाद यशवंत सिन्हा, उन्होंने 8 बार, प्रणब मुखर्जी, उन्होंने भी 8 बार, और पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने 6 बार बजट पेश किया है। और आज छठी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करने जा रहे हैं। चुनावी साल है, काफी कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ होने वाला है। टैक्स पेयर्स वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं टैक्स में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। चुनाव है इसलिए भी ऐलान हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार कहीं ना कहीं ऐलान तो कुछ कर सकती है। तो इसी लाल डायरी में देश का पिटारा है, देश का बजट है, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस वक्त हाथों में नजर आ रहा होगा। और वो उसकी तस्वीरें दिखाती हुई मीडिया के उन कैमरों को, क्योंकि इस पर सबकी नजर रहती है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने संसद भवन की ओर रवाना होती हैं, तो सबसे पहले फोटो सेशन का एक कार्यक्रम होता है, उसमें तमाम वो वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं। जब वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय से बाहर निकलती हैं, और उसके साथ साथ उनके हाथ में वो लाल डायरी होती है जिसमें देश का बजट है। तो इसी लाल डायरी के पिटारे में क्या कुछ छिपा हुआ है, क्या कुछ बड़े ऐलान होने हैं, वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से ठीक थोड़ी देर बाद संसद भवन में जब इसको पेश करेंगी, वो बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगी, तभी से पिटारा खुलना शुरू हो जाएगा। क्या कुछ बजट में है, क्या कुछ रहने वाला है, हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन उम्मीद यह है कि 2019 का जब पहला अंतरिम बजट आया था, उसको ध्यान में रखते हुए उम्मीदें और बढ़ जाती हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसे बड़े ऐलान हो सकते हैं। अब हम आपको वो भी सुनवा देते हैं कि आम लोगों का क्या कहना है, आम लोग क्या उम्मीदें कर रहे हैं और क्या कुछ वो सोच रहे हैं कि इस बजट से क्या कुछ उनके लिए खास होने वाला है। 2019 का भी उन्होंने अंतरिम बजट देखा है, इससे पहले के भी बजट देखे हैं। अब वो ध्यान लगाए बैठे हैं कि इस दूसरे अंतरिम बजट में, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा अंतरिम बजट है, तो इसमें क्या कुछ उनके लिए खास रहने वाला है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सीधा सुनवा देते हैं और उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं इस अंतरिम बजट से। सुनिए। देखिए, एक बजट तो महिलाओं के लिए किचन से रिलेटेड होता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो है एक मध्यम वर्गीय फैमिली में बच्चों की एजुकेशन है, ये सब है, तो सरकारी ही स्कूलों में ऐसी सुविधाएं क्यों ना दी जाएं कि हम लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें ही ना। तो अगर इस तरह का कुछ बजट में लाया जाए तो वो भी एक बेनिफिशियल होगा। और ये बात रही सिलेंडर की, सब्जियां दालें, वो सब भी होनी चाहिए, कम हो तो एक फैमिली जो उसमें अपना गुजारा कर सके। मैम, अक्सर देखा जाए कि सब्जियों के दाम कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, तो उससे कितना असर पड़ता है आपके रसोई? देखिए, असर तो पड़ता है, कई बार टमाटर 80 रुपीज हो जाते हैं, प्याज हो जाता है, तो वो सब फर्क तो पड़ता ही है। देखिए, तो इस बार उम्मीद करते हैं कि बजट अच्छा आने की उम्मीद है? उम्मीद तो है। अब देखिए, जब गवर्नमेंट बनती है उसके बाद क्या होता है, अभी तो अंतरिम बजट ही है।
बजट की बात करें और महिलाओं से, क्योंकि आप लोग आज रूबरू हो रहे हैं, तो महिलाओं के लिए तो डेली दिनचर्या की चीजें और किचन से ही शुरुआत होती है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि किचन को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए जो छोटे मतलब आप कहें गरीब परिवार कह सकते हैं हम लोग, तो उनको ध्यान में रखते हुए बजट बनाया जाए। किचन की बातें करें, गैस सिलेंडर की बात करें और जो हमारी दिनचर्या की चीजें हैं उस पे थोड़ा ध्यान रखते हुए बजट बनाया जाए। उसमें हमें रियायत मिलनी चाहिए। स्कूल फीस तो शायद सरकार के हैंड में नहीं आती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में आजकल सब पढ़ाना पसंद करते हैं। सरकारी सुविधाएं तो लोगों को चाहिए, पर सरकारी स्कूल्स नहीं चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल्स नहीं चाहिए, सरकारी सुविधाएं, नौकरी सबको सरकारी चाहिए। जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं वो सबको चाहिए, हर घर में है। दुनिया आज के टाइम में इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने सरकारी योजना का लाभ ना उठाया हो। पर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना है, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं दिखाना है। तो सिर्फ सरकार से उम्मीदें ये होती हैं कि जो अपनी कंफर्ट के हिसाब से हो बात, सिर्फ वही करना लोग चाहते हैं। तो आज भी वही है कि एक तो पेट्रोल पे थोड़ी रियायत हो और गैस सिलेंडर्स पे हो। किचन की और दिनचर्या की डेली की जो महिलाओं की जरूरतें हैं उसमें थोड़ी हमें रियायत मिलनी चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि इस बजट में हम लोग को जैसे फ्यूल चार्जेस हैं वो अंडर जीएसटी आए, जैसे डीजल है, पीएनजी है, सो दैट वी कैन टेक द बेनिफिट। हम लोग को जीएसटी का कोई बेनिफिट नहीं है, ये सब चीजें वैट के अंडर है। तो हम लोग चाहते हैं कि जीएसटी में आएगा तो हम उसका बेनिफिट ले सकें। मैम अगर बात करें अगर पेट्रोल डीजल की, अगर जीएसटी में लाएंगे तो कितना असर आपके कंपनी पर काफी असर आएगा। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में भी हम लोग को कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाती है हम लोग की। तो अगर ये सब चीजें अंडर जीएसटी आएंगी तो हम लोग को एज ओवरऑल काफी इफेक्ट आएगा हमारी उस पर। नहीं, जैसे हमारी सरकार हर साल इनकम टैक्स की रिबेट में कमी छूट देती है, तो इस साल भी अब इलेक्शन है, काफी बड़ा इलेक्शन है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बार भी अच्छा खासा हमें बजट में छूट देगी। और मेरा सुझाव सरकार को ये है कि जो जीएसटी की दरें लगी हुई हैं प्रोडक्ट्स पे, उसको रिशफलिंग करनी चाहिए। जैसे जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मेरी प्रेशर कुकर की फैक्ट्री है, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि जैसे गैस स्टोव है, गैस स्टोव एक एसेंशियल प्रोडक्ट है, एक गरीब के घर में भी यूज होता है और सब लोग गैस यूज करते हैं, तो उस पर 18% का टैक्स है। तो वो इस तरीके से जो प्रोडक्ट, उस पर टैक्स कम होना चाहिए। 18% जीएसटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो कि हाई लेवल के प्रोडक्ट्स हैं उसमें चलता है, मगर जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर किसी को जरूरत है, गरीब को भी और हर मध्य वर्ग के आदमी को, तो उन प्रोडक्ट्स पे टैक्स स्लैब कम होनी चाहिए। ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं, एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, उन पे टैक्स स्लैब कम होना चाहिए। तो ये मेरा एक सरकार को काफी बड़ा सुझाव है। और बाकी बिजली की दरें भी इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ी कम होनी चाहिए, या फिर जैसे कि जो ओवर टाइम लगाते हैं, जो रात को बिजली जिसकी 24 घंटे कारखाने चलते हैं, तो रात को भी उसके अंदर हमारा टैक्स बिजली का दर हमारी कम होनी चाहिए। सरकार को इनकम टैक्स में छूट देनी चाहिए और कैपिटल गेन्स में भी छूट देनी चाहिए। कैपिटल गेन बहुत पड़ जाता है, जैसे किसी ने प्रॉपर्टी को बेचता है तो उसमें टैक्स की दर बहुत ज्यादा है, उसको कम करना चाहिए। अगर बात करें अगर बिजली की और बाकी केमिकल्स की, जो रॉ मटेरियल लेते हैं उसको आप, रॉ मटीरियल्स में बड़ी फ्लक्चुएशन है, बहुत अप डाउन आता है, उससे भी बहुत नुकसान होता है व्यापारियों को। उसमें भी सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे जो एमएसएमईज हैं या दूसरी भी फैक्ट्रियां हैं उनको राहत मिले। जो फ्लक्चुएशंस हैं उसमें कभी एकदम रेट बढ़ जाते हैं, एकदम कम हो जाते हैं, तो वो नुकसान होता है। देखिए, एक बजट तो महिलाओं के। तो अभी आप उन लोगों को सुन रहे थे जो लोग लगातार उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इस बजट में उनके लिए क्या कुछ खास हो सकता है। आपने उनको सुना, क्या कुछ उम्मीदें लगाए वो बैठे हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए इस बजट से, क्योंकि ये बजट पूर्णकालिक बजट नहीं है और इस बजट में सरकार का लेखा जोखा होगा, क्योंकि 5 से 6 महीने का ये बजट है। लेकिन तीन ऐसी चीजें हैं जिन पर उम्मीदें की जा सकती हैं इस अंतरिम बजट में। मोदी सरकार उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ी घोषणाएं या फिर बड़ा ऐलान कर सकती है। पहली, किसानों के लिए बड़ा ऐलान क्या हो सकता है? किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 6,000 रुपए साल में दिए जाते हैं, 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपए, तो उसको बढ़ाया जा सकता है इस अंतरिम बजट में, जो कयास लगाए जा रहे हैं। और दूसरा, जो 80C जो इनकम टैक्स की धारा है 80C, उसके तहत जो छूट दी जाती है, ईपीएफ पीएफ वगैरह जो होता है, उसमें भी उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी है वो ये है कि जो अभी तक कह सकते हैं आयुष्मान योजना के तहत जो 5 लाख का बीमा सुरक्षा कवर दिया जाता है इस योजना के तहत, उसको 10 लाख किया जा सकता है। ये 3 बड़ी ऐसी घोषणाएं आज
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती हैं, लेकिन होगी ये नहीं, उम्मीद ही की जा सकती है। हालांकि इसलिए उम्मीदें कर सकते हैं क्योंकि पहले अंतरिम बजट में भी हमने देखा है कुछ बड़े ऐलान हुए थे, तो इस बजट के अंतरिम बजट में भी कह सकते हैं 3 बड़े ऐलान हो सकते हैं। किसानों की जो सम्मान निधि है उसको बढ़ाया जा सकता है, 80C के तहत जो छूट दी जाती है टैक्स में उस दायरे को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो बीमा सुरक्षा कवर जो है 5 लाख का, सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन के बाहर सोनिया गांधी कांग्रेस चेयरपर्सन वहां पर पहुंची हुई थी और वो भी सब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे से क्योंकि समय खत्म हो गया है और 10:55 हो गया है। 5 मिनट के बाद कह सकते हैं बजट पेश करने वाली है निर्मला सीतारमण। सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्या कुछ उस लाल डायरी के पिटारे से निकलेगा। ये बड़ी कह सकते हैं वीक ब्रेकिंग होगी जब पढ़ना बजट शुरू करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 6वीं बार आज देश का बजट पेश कर रही हैं, तो निर्मला सीतारमण से सबको उम्मीदें हैं। तो लगातार हम 3 घोषणाओं का जिक्र कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं बड़े ऐलान कर सकती है मोदी सरकार। पहला ये कि जो किसानों को 6,000 रुपए साल में दिए जाते हैं, 2-2 हजार करके 3 बार 4 महीने के अंतराल पर किसान सम्मान निधि योजना के तहत उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं इस अंतरिम बजट में। और दूसरा, सेक्शन 80C की जो टैक्स छूट लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए हो सकती है, उसको बढ़ाया जा सकता है, 2.5 लाख तक हो सकती है। और तीसरा, जो आयुष्मान योजना के तहत जो सुरक्षा कवर होता है 5 लाख रुपए का केंद्र सरकार जो देती है उसका दायरा बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा सकता है। तो 3 ऐसी बड़ी घोषणाएं हैं। इनकी उम्मीदें इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जब पहली बार अंतरिम बजट मोदी सरकार ने अपना पेश किया था साल 2019 में, पीयूष गोयल ने पेश किया था, तब भी यही बड़े ऐलान हुए थे। किसानों के लिए योजना आई थी किसान सम्मान निधि। तो इस बार अंतरिम बजट में उम्मीद है कि इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होगा, युवा वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं इस अंतरिम बजट से, उनके लिए क्या रोजगार के पिटारा खुलेगा या फिर कुछ ऐसी योजनाएं आएंगी जिससे युवा देश का लाभान्वित होगा। तो तीसरी तरफ वो लोग भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, गरीब जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं। चौथी तरफ जो हमारे देश के किसान हैं वो भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो आत्मनिर्भर योजना से लेकर रेलवे का बजट तक कई बड़े ऐलान आज संभव हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, ऐसा हम लगातार कह रहे हैं क्योंकि ये 5 से 6 महीने का लेखा जोखा है। उसके बाद पूरा लेखा जोखा सरकार दी। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल जब उन्होंने संबोधित किया, मीडिया को ब्रीफ किया, तब भी उन्होंने, जब बजट सेशन कल शुरू हो रहा था तब प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि इस बजट में कुछ खास नहीं होने वाला है, ये लेखा जोखा सरकार का है। और उन्होंने जो विरोधी दल हैं उनके सांसदों से भी अपील की थी। फिलहाल मध्यम वर्ग किसानों को लुभाने की योजनाएं आज पेश हो सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थोड़ी देर बाद बजट पेश करेंगे और जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिकों के लिए भी कई बड़ी योजनाएं आज लॉन्च कर सकती है। घर खरीदने पर टैक्स में छूट का दायरा बढ़ा सकती है सरकार। आज पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार के टैक्स का हिस्सा घट सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बजट पेश से पहले जो उम्मीद जताई जा रही, कयास लगाए जा रहे हैं, जो मध्यम वर्ग हैं, जो किसान हैं, उनको लुभाने के लिए आज बड़ी योजनाएं लॉन्च कर सकती है मोदी सरकार। क्योंकि चुनाव सर पर है तो उससे पहले ये बजट पेश हो रहा है, अंतरिम बजट है। घर खरीदने पर टैक्स में छूट का दायरा बढ़ा सकती है सरकार। तो अब उम्मीदें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लोगों की उम्मीदें भी क्यों ना बढ़े, चुनाव सर पर है। 2 से 3 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होना है और उससे पहले अंतरिम बजट, तो उम्मीदें काफी कुछ बढ़ गई हैं। मध्यम वर्ग और किसानों के लिए बड़े ऐलान आज कर सकती है मोदी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो आज 6ठी बार संसद में बजट पेश करेंगी, उनके नाम भी आज एक रिकॉर्ड भी बनने वाला है। बजट लोगों के लिए होगा, लोगों के गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए मेरे प्रधानमंत्री हमेशा सोचते हैं कि जो अंतिम लाइन में, अंतिम कतार में सबसे पीछे खड़ा है उसके लिए सोचते हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबके प्रयास से, उसी से देखते हुए बजट आम जनता के लिए बजट होगा। कौन है? रास्ता छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ, मैंने तो सोचा नहीं डाला।
100%। जमीन पर इतना झूठा साबित हुआ है कि सब कुछ महंगा हो गया है। तो इस सत्र में भी कोई बहुत ज्यादा आशा नहीं है, बहुत उम्मीद नहीं है। बाकी पिटारा खुलने दीजिए, फिर बात करेंगे। भाई लगाओ, लेकिन फिर कैमरे में मत लगाओ यार। सी देखो तुमने क्या किया। तो सोनिया गांधी इस वक्त पहुंची हुई हैं संसद भवन में बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए। आपने अभी तस्वीरों में देखा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी इस वक्त संसद भवन पहुंची हुई है। तस्वीरों में आपको जो इमरान प्रतापगढ़ी हैं राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी के, वो भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो विपक्ष के तमाम वो सांसद इस बजट सेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि इससे पहले कई आरोप भी लगाए हैं अपोजिशन पार्टियों की तरफ से। तो इमरान प्रतापगढ़ी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। नारे खोखले हैं, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार का दावा जो है वो जमीन पर इतना झूठा साबित हुआ है कि सब कुछ महंगा हो गया है। तो इस सत्र में भी कोई बहुत ज्यादा आशा नहीं है, बहुत उम्मीद नहीं है। बाकी पिटारा खुलने दीजिए, फिर बात करेंगे। No comment. I have no expectation. Government is not in a particularly good position, and then they will announce nothing, and then they will say that it's an interim budget. So I have no expectation. Economy is in a bad way. Unemployment and price rise are the two main problems. And what is your comment on Hemant Soren's arrest? I am disappointed. This is part of the government's effort to stifle the opposition. तो इमरान प्रतापगढ़ी को अभी आप सुन रहे थे। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे थे कि इस बजट से खास उम्मीदें नहीं हैं और पिटारा खुलने दीजिए, फिर बात करेंगे उस पिटारे में क्या कुछ है। तो विपक्ष उस पिटारे पर नजर गड़ाए बैठा है कि क्या कुछ ऐलान करे मोदी सरकार और हम उस पर निशाना साधें। फिलहाल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस वक्त संसद भवन पहुंच चुकी हैं। सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी बजट सेशन में हिस्सा लेने के लिए संसद भवन पहुंची हैं। टाइम 11 बज चुके हैं, काउंटडाउन खत्म हो चुका है। निर्मला सीतारमण कुछ ही देर में बजट पेश करने वाली हैं। सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज छठी बार बजट पेश करेंगे, उनका अपना छठी बार बजट पेश करने का आज एक रिकॉर्ड भी बन जाएगा, क्योंकि महिलाओं के नाम दूसरी ऐसी वो महिला वित्त मंत्री होंगी जिनके नाम ये रिकॉर्ड आज लिख जाएगा। इससे पहले इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था। तो 11 बजे का समय हो चुका है और बस इंतजार खत्म हो चुका है। काउंटडाउन जो था वो पूरा हो चुका है। किसी भी क्षण वो तस्वीरें, और हम आपको सीधे संसद भवन लेकर चलेंगे जहां पर ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो कुछ बोल रहे हैं और शायद कार्रवाई शुरू हो गई है। सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है, बजट की कार्रवाई शुरू हो गई है। ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सीधे सुनवाते हैं। प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसे मेंबर पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी, Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale.
The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once-in-a-century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays, so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilayeं, Yuva, and Annadata,
Their needs, their aspirations, and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All four require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jalandhar accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the third time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs,
7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen-first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production,
as if in the 21st century is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil. Unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity, backed by Sabka Prayas, has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, "There is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit." Unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances
relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care, and development. The newly designed You-Win platform
for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was a government which set up a separate department for fisheries, realizing तो निर्मला सीतारमण बड़े बड़े ऐलान कर रही हैं। अभी आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके साथ साथ कई उन्होंने बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि 7 IIM और 7 IIT देश में बने हैं। इसके अलावा देश की वो तमाम मोदी सरकार की बड़ी बड़ी उपलब्धियां वो अभी संसद भवन में रख रही हैं और लगातार बता रही हैं किस तरीके से एक के बाद एक बड़े ऐलान अभी होने बाकी हैं। फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बड़ी बातें अभी तक उन्होंने कही हैं वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। 10 साल में अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि रोजगार में बढ़ोतरी हुई है, यानी रोजगार को लेकर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। और सबसे बड़ा जो हमला बोला गया है इस बजट सत्र में वित्त मंत्री के भाषण से वो ये भाई भतीजावाद को 83 lakh SHGs, 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance.
Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. Technological changes, new age technologies and data are changing the lives of people and businesses. They are also enabling new economic opportunities and facilitating provision of high-quality services at affordable prices for all, including those at the bottom of the pyramid. Opportunities for India at the global level are expanding. India is showing solutions through innovation and entrepreneurship of its people. Research and innovation for catalyzing growth, employment, and development. Prime Minister Lal Bahadur Shastri gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. Prime Minister Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee ji, made that Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Prime Minister Modi has furthered that to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, and Jai Anusandhan, as innovation is the foundation of development. For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of 1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low and or nil. I repeat that sentence. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. This will encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Infrastructure development. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. Railways. 3 major railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety,
convenience and comfort of passengers. Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under Udan scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities, focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis.
To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year
with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honourable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honourable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue
including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST 4-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first started. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayers' services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development and performance, effective delivery and Jan Kalyan has given the government trust,
confidence and blessings of the people to realize whatever it takes the goal of Vikasit Bharat with good intentions, true dedication and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. मंत्री निर्मला सीतारमण अभी बजट भाषण पढ़ रही थी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बजट में इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टैक्स की जो व्यवस्था है वो पहले वाली ही बनी रहेगी, यानी इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आय करदाताओं को कोई राहत नहीं मिली है इस अंतरिम बजट से। जिस तरीके से उम्मीदें लगाए बैठे थे टैक्स पेयर्स कि इस बजट में कहीं ना कहीं उनके लिए कोई राहत हो सकती है, इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले वाला ही टैक्स स्लैब लागू रहेगा, कोई बदलाव नहीं किया गया है इनकम टैक्स स्लैब में। तो निर्मला सीतारमण ने यह बड़ा ऐलान कर दिया, कोई राहत नहीं दी है आय करदाताओं को इस बजट से, कोई राहत, कोई उम्मीदें जो उनकी थी उन पर पानी फिर गया है। टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, पहले वाला ही इनकम टैक्स स्लैब लागू रहेगा जो पहले लागू किया गया था। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट में जो 1 साल की छूट जरूर दी गई है, बाकी कोई राहत की उम्मीद नहीं है टैक्स करदाताओं के लिए जो कर देते हैं, टैक्स देते हैं सरकार को। और अभी निर्मला सीतारमण ने बताया भी कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनका जो कर संग्रहण है उसमें काफी वृद्धि हुई, पहले के मुकाबले टैक्स ज्यादा संख्या में सरकार के पास पहुंचा है, फिर भी टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं दी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ा बयान, बड़े भाषण में बड़ी बड़ी बातें कही हैं निर्मला सीतारमण ने। जल्दी से हम अपने दर्शकों को वो बातें भी बता देते हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में 25 करोड़ घर बनाए जाएंगे, इसके साथ 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के लिए 34 लाख लोन देगी सरकार। इसके अलावा राज्यों को 75,000 करोड़ का कर्ज दिया है। ये बड़ी जानकारी दी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट भाषण जो बयान जो दे रही थी उसमें उन्होंने कहा है कि राज्यों को, राज्य सरकारों को 75,000 करोड़ का कर्ज दिया गया है। तो जनसंख्या पर कमेटी का गठन होगा, निर्मला सीतारमण ने ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा मछुआरों के लिए 55 लाख नौकरियों के अवसर भी लाए जाएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इसके अलावा रेलवे के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। 3 नए रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे, ये निर्मला सीतारमण ने ऐलान कर दिया है। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसके अलावा 7 IIT और IIM देश में बने हैं। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। तो देखिए किस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े बड़े ऐलान किए, लेकिन राहत की कोई खबर नहीं, राहत की कोई उम्मीद नहीं इस बजट से। टैक्स पेयर्स जो एक उम्मीद लगाए बैठे थे, किसान उम्मीद लगाए बैठे थे कि कहीं ना कहीं जो PM किसान सम्मान निधि योजना है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, उनको भी राहत नहीं, टैक्स पेयर्स को भी कोई राहत नहीं मिली है इस अंतरिम बजट से। फिलहाल राहत वाला ये बजट नहीं है। जैसा 2019 में अंतरिम बजट दिखाई दिया था, मोदी सरकार का पहला अंतरिम बजट था साल 2019 में, उस अंतरिम बजट में कई बड़े ऐलान हुए थे, लेकिन इस दूसरे अंतरिम बजट में, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले अंतरिम बजट में कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, आय करदाताओं को कोई राहत नहीं दी गई है। निर्मला सीतारमण ने साफ क्लियर कर दिया कि पुराना ही टैक्स स्लैब लागू रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से टैक्स में बढ़ोतरी हुई है, पहले के मुकाबले काफी संख्या में टैक्स सरकार के पास पहुंचा है, और इसी शायद यही वजह है कि टैक्स पेयर जो हैं वो उम्मीद लगाए थे कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो राहत मिल सकती है। फिलहाल कोई राहत नहीं, चुनावी बजट है
और चुनाव को फोकस में रखते हुए जिस तरीके से उम्मीदें की जा रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ इस बजट में दिखाई नहीं दिया। हालांकि इसके संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही दे दिए थे। जब उन्होंने बजट सेशन की शुरुआत हुई तो उससे पहले मीडिया को ब्रीफ किया था और कह दिया था कि इसमें कुछ खास होने वाला नहीं है, सरकार अपना लेखा जोखा पेश करेगी। और शायद इस बजट में लेखा जोखा ही दिखाई दिया है। सरकार ने अपना लेखा जोखा ही बताया है कि उन्होंने क्या क्या किया है और क्या क्या आगे करने वाली है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि टैक्स पेयर्स को कह सकते हैं कि उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया है, जो वो उम्मीदें लगाए बैठे थे। तो स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पूरे टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। ये निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट क्लियर कह दिया है अपने बजट में। अंतरिम बजट में बड़े ऐलानों से परहेज किया गया है पूरी तरीके से, यानी कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। आयकर दाताओं को कोई राहत नहीं है, किसानों के लिए कोई बड़ी योजनाएं लॉन्च नहीं की गई हैं। जो योजना चल रही थी पीएम किसान सम्मान निधि, उसमें भी धनराशि में बढ़ोतरी नहीं की गई है। कोई बड़ा ऐलान नहीं, परहेज किया गया है पूरी तरीके से। बड़ी घोषणाओं से, बड़े ऐलानों से निर्मला सीतारमण ने बड़े बड़ी बातें जरूर कही हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि इस बार के बजट में कुछ खास नहीं होगा, सरकार अपना लेखा जोखा पेश करेगी, और वही इसमें दिखाई दिया। उसी की झांकी दिखाई दी इस बजट में, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कल क्लियर कर दिया था बजट में कुछ खास नहीं होगा। वाकई में बजट में कुछ भी खास नहीं है, सिर्फ सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। Equitable growth approach of the government, and we have to wait and see regarding the direct tax and indirect tax proposals. As the finance minister has said, that will be taken up only in the final budget. So therefore, this budget does not cover that. So as far as we are concerned, it's a very positive step forward with regard to having the headroom available for growth, considering the fiscal deficit and also the focus on equitable growth. From an industry perspective, obviously we will wait for the main budget to come to look at that details. Thank you. तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिस तरीके से हम उम्मीद लगाए बैठे थे, पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा था इस अंतरिम बजट पर, क्योंकि चुनावी साल है, तो उम्मीद यही थी कि चुनावी साल में कहीं ना कहीं जनता को लुभाने के लिए मोदी सरकार बड़े बड़े ऐलान और घोषणाएं कर सकती है। लेकिन इन घोषणाओं और ऐलान से परहेज किया गया है इस अंतरिम बजट में। निर्मला सीतारमण ने जिस तरीके से अभी अपनी जो बजट स्पीच पढ़ी है, करीब 1 घंटे 55 मिनट वो भाषण उन्होंने लंबा दिया है और बड़े बड़े उन्होंने ऐलान किए हैं। लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। तो इस बजट में क्या क्या योजनाएं सरकार की जो है जनता तक पहुंची हैं और क्या क्या सरकार ने अपना लेखा जोखा पेश किया है, क्या कुछ बड़ी बातें निर्मला सीतारमण ने कही हैं, वो हम एक बार अपने दर्शकों को फटाक से बता देते हैं कि निर्मला सीतारमण ने किस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कही हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ी बात कही गई है इस बजट भाषण में। जनसंख्या को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा 2014 से 2023 तक जो पीडीआई है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर 11% का ज्यादा खर्च किया जाएगा। इसके मुकाबले 2014 के पहले वाले देश से जो है देश वो पूरी तरीके से उबर चुका है। यानी 2014 में जब से मोदी सरकार बनी है तब से देश में विकास की कह सकते हैं धारा बही है, ऐसा निर्मला सीतारमण ने बजट में आज कहा है और संकेत दिए हैं। तो कुल मिलाकर जो 2025-26 का हमारा घाटा है वो कैसे काम करेगा, तो निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इसको कम करने के लिए प्रयासरत हैं और जो कर संग्रह है वो 3% से अधिक हो गया है। यानी घाटा जो हमारे देश का है, वित्तीय घाटा है, वो सुधरेगा क्योंकि 3% कर पहले के मुकाबले ज्यादा मिला है, उसमें बढ़ोतरी हुई। राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। तो वहीं 10 साल में टैक्स कलेक्शन जो था, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हुई, जैसे मैंने आपको बजट से ही पहले कहा था कि उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा अमाउंट इंक्रीज होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं कंसीडर किया गया है कि जो लास्ट ईयर 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसे बढ़ाकर 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा किया गया है। वो एक बहुत बड़ा वेलकम पॉइंट है। और दूसरी बड़ी बात, सबसे ज़्यादा जो है बॉटम ऑफ द पिरामिड पे ध्यान दिया गया है, खास करके जो
ऐसे जो एक ऐसा तबका है जो कहीं ना कहीं अभी एड्रेस नहीं हुआ था, उसको बार बार प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया है। चाहे हम युवा शक्ति की बात करें, चाहे नारी शक्ति की बात करें, उनके ऊपर फोकस ज़्यादा है। और ऑफ कोर्स एक संतुलित बजट है, जितना भी बेस्ट कर सकते थे। सो क्वाइट होपफुल कि आने वाले वक्त में और अनाउंसमेंट आपको दिखाई देगी। राइट, तो देखिए सबसे बड़ी बात, जो लोग रेंटेड हाउसेज में रहते हैं या चॉल्स या ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, तो वित्त मंत्री जी ने कहा है उनके लिए एक स्कीम हम जल्दी लेकर आने वाले हैं। सो आज की बजट अनाउंसमेंट में उस स्कीम को अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन क्वाइट होपफुल कि अगर उन्होंने इसको कोट किया है तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में हमें वो स्कीम दिखाई देगी। तो आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना फोकस दिया गया है, कहीं ना कहीं कोविड के बाद जो निकल के आ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे ले जाने के लिए ये एक पहल जो समझ आ रही है की तरफ से? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी का 2014 से ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस रहा है। ये 2024 तो एक केवल उसका पड़ाव है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में आपको बहुत अच्छी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिखाई देंगी। और एक जैसा आप देखिए कितना बेस चीज़ किया है कि जो रेलवे कॉरिडोर है उनकी अनाउंसमेंट की है। दूसरी बड़ी बात क्या किया है कि क्योंकि जो रेलवे का अनुभव है लोगों का, वो इंक्रीमेंट किया जा सके, ज़्यादा बेहतर किया जा सके, तो जो रेलवे बोगीज़ हैं उनको इंक्रीज करके, उनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करके वंदे भारत की लेवल तक लाने की बात की गई है, जो एक बहुत विजनरी बात है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुनने को अच्छी हैं, लेकिन बिकॉज मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, तो मैं कुछ और उम्मीदें कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि शायद कुछ होगा, लेकिन क्वाइट फॉर होपफुल कि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आफ्टर जब भी इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे। तो बजट निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। कई बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, लेकिन इन बड़ी बातों में सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की उपलब्धियां दिखाई दी हैं। जो मोदी सरकार ने बीते 5 साल में काम किए हैं या फिर बीते 10 साल में जो काम किए हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर तारीफ करती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और लेखा जोखा पेश करती हुई दिखाई दी। तो कुल मिलाकर 2014 से अब तक 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट स्पीच में कहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मोदी के बताए गए जो जातीय फोकस है उस पर भी काम किया गया है। देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है, वो हम आपको एक बार पॉइंट टू पॉइंट समझा देते हैं। भारत सरकार का पीएम मोदी के बताए 4 जातियों पर फोकस है। इसमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता शामिल हैं। विकसित भारत बनाने का जो एक संकल्प है, गोल है प्रधानमंत्री मोदी का या फिर मोदी सरकार का, वो भी यहां पर दिखाई दिया। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 2027 तक विकसित भारत बनाने का एक गोल रखा गया है। 2027 तक भारत को पूरी तरीके से विकसित बनाएंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है इस मोदी सरकार के अंतरिम बजट में। साथ ही और कई बड़े कह सकते हैं जो बातें कही गई हैं। साथ ही रेल की अगर बात की जाए, पूरे रेलवे सिस्टम की बात की जाए, तो 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। साथ ही जो गाड़ियों के जो डिब्बे हैं उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। 41,000 रेल डिब्बे वंदे भारत योजना के तहत बन रहे हैं, जो बाकी ट्रेनों में लगाए जाएंगे। यानी जो पुरानी व्यवस्था है उसको सुधारा जाएगा और उसमें बदलाव किया जाएगा। साथ ही हवाई अड्डों की संख्या भी तेजी से बढ़ाई जा रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा है विमानन क्षेत्रों में करीब 10 सालों में काफी कुछ कायाकल्प हो चुका है। यात्रा सुविधाएं और भी बढ़ाई जाएंगी, निर्मला सीतारमण ने कह दिया है। Clearly demonstrate that over 18 lakh crores is the unfunded extent of the union budget for this year, and this number is only going to increase over the next year. If you leave that aside for a moment, the rest of the budget speech was mere grandstanding. It was like driving, looking into the rear view mirror rather than looking ahead. So therefore, the finance minister spent all her time in extolling her own track record, which obviously is questionable, and trying to run down what had happened 10 years back. We will reply to it in great detail when the debate on the budget takes place. तो अभी आप कांग्रेस सांसद को सुन रहे थे, किस तरीके से निशाना साध रहे थे मोदी सरकार पर। कहा जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों के मुताबिक कुछ नहीं इस अंतरिम बजट में दिखाई दिया। फिलहाल
सरकार का पूरा लेखा जोखा जरूर पेश किया है निर्मला सीतारमण ने और 75,000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन दिया गया है राज्य सरकारों को। ये निर्मला सीतारमण ने आज बजट में जानकारी दी है। तो राज्य सरकारों पर किस तरीके का लोन का बोझ बढ़ा है, इस आंकड़े को आप देखकर समझ सकते हैं। 75,000 करोड़ लोन दिया गया है राज्य सरकारों को, उसमें कई राज्यों की सरकारें शामिल हैं जिन्होंने केंद्र से लोन लिया है। Insofar as the rest is concerned, we will give a very detailed reply during the discussion on the budget. कांग्रेस सांसद किस तरीके से निशाना साध रहे, सोनिया गांधी संसद भवन से बाहर निकलती हुई और मीडिया को शायद कुछ ब्रीफ करें, क्योंकि बजट सेशन से बाहर निकलती हुई सोनिया गांधी, हालांकि बिना कुछ बोले हुए वो निकल चुकी हैं। तो सोनिया गांधी भी बजट सेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी और उन्होंने इस बजट सेशन में हिस्सा लिया। बजट से काफी कुछ उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों पर कुछ भी नहीं हो सका। बड़ी बड़ी बातें निर्मला सीतारमण ने जरूर कही और अपनी सरकार की उपलब्धियां यहाँ पर देखने को मिली हैं, लेकिन बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा कुछ भी इस बजट में दिखाई नहीं दिया। क्या कुछ निर्मला सीतारमण ने कहा है, क्या कुछ उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं और कह सकते हैं बड़े बड़े वादे किए हैं जो अगली बार जुलाई में बजट आएगा। Well, it was one of the shortest speeches on record in the budget, and not very much came out of it. As usual, a lot of rhetorical language, very little concrete on implementation. Some serious questions about areas of omission. No reference to the success or failure of the PLI scheme, which is taking so much money. She talked about foreign investment without acknowledging that investment has come down significantly. She talked, frankly, about a number of things that are couched in vague language like for confidence and hope and so on. But when it comes to hard figures, there were very few figures available. For example, she talked about foreign direct investment without acknowledging that it has come down as a percentage of GDP, not gone up. She talked about, she didn't talk about unemployment, which has gone up to record levels. She didn't talk about youth unemployment. She didn't talk about declining female labor participation when talking about Nari Shakti. So there were so many omissions. I must say that this is going to be a very, very disappointing speech in terms of being couched entirely in generalities and without enough substance, nor any willingness to address the specific problems of the economy. She could have taken credit for certain things and challenged certain things, but instead what she gave us was nothing but unvarnished PR kind of rhetoric. So GDP has been given the new definition, that is governance, development and performance under the leadership of Prime Minister. Yeah, the GDP I see is government disruption. I see not just not development, but rather, frankly, demographic betrayal of the young. And when I see P, I see poverty rising and particularly inequality at the bottom echelons of our society. So GDP has a very different meaning in what we are seeing in the country than what she is saying. जी, हिस्टोरिकली मैं ये कहना चाहती हूँ एक शब्द में नहीं, a woman empowering the nation under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He always believed in that the country has to go forward with women leading the country. बहुत बड़ी उपलब्धि है, गरीब, किसान, युवा, महिला, हर किसी तबके को हम आगे बढ़ा रहे हैं विकसित भारत के लिए। और प्रधानमंत्री जी सिर्फ भारत को आगे नहीं बढ़ाए, विश्व में भारत को आगे बढ़ा रहा है और विश्व भारत को देख रहा है। एक और बात कही उन्होंने कि जुलाई में जब पूरा बजट पेश करूंगी, तो किस तरीके से इस मतलब को समझते हैं? नहीं, इसका मतलब है जनता प्यार दे रही है, ये प्यार का अवलोकन है। जैसे बजट में हर साल में हम टैक्सेशन का अवलोकन करते हैं, उसका प्रमाण देखते हैं, उसका गणित देखते हैं। ये भी गणित उसी का है कि जनता के प्यार का गणित है कि जुलाई में बजट होगा। लेकिन बहुत जरूरी बात है, उसके पहले जो व्हाइट पेपर आएगा तो हमारा जो नव मतदाता है वो जरूर देखेगा 2014 के पहले भारत की स्थिति कितनी खराब थी और 10 साल में भारत ने क्या क्या नहीं अचीव किया है। तो अभी आप तमाम सांसदों को सुन रहे थे जो संसद भवन से बाहर निकले हैं। अभी बीजेपी सांसद को आप सुन रहे थे किस तरीके से दावे कर रही हैं, लेकिन इन दावों का क्या होगा, क्योंकि अंतरिम बजट में जो उम्मीदें लगाए लोग बैठे थे, देश की 140 करोड़ जनता बैठे थे कि कहीं ना कहीं कुछ राहत ऐसी मिलेगी और वो राहत यहाँ पर दिखाई हो, किसान हो, उद्योगपति हो, बेरोजगार लोग हो, सभी लोगों के लिए बजट बहुत ही लाभदायक। इनकम टैक्स में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब अभी चुनावी वर्ष है, अब देखिए।
तो अभी आप पशुपति पारस को सुन रहे थे, किस तरीके से वो समझा रहे थे। अब आपको बीके सिंह को सुनाते हैं, कुछ कह रहे हैं। है सर, और लोगों को इससे कितना लाभ मिलेगा? देखिए, टैक्स में कोई बदलाव नहीं है तो लोगों को लाभ तो मिल ही रहा है। लोग बाग जो सोचते रहते हैं कि टैक्स के अंदर बदलाव आएगा, और हर चीज के बाद उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जाए और टैक्स पेयर के लिए और क्या सुविधाएं की जाए, इसके बारे में बताई गई है। आम जन को भी इस बजट में टच किया गया है, आवास मिलेंगे और बाकी की चीजों का भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल, सबको टच किया जाए। நிதிநிலை அறிக்கை என்பது அரசாங்கத்துடைய வாடிக்கையான செலவுகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக சமர்ப்பிக்கும் பட்ஜெட் தான் இது. இதுல எந்த விதமான அறிவிப்பு तो बजट पेश कर दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया है और 6वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। दूसरी देश की महिला वित्त मंत्री बन गई हैं जिन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश किया गया है। लेकिन बात अंतरिम बजट की, जिसे अब से ठीक थोड़ी देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया। उम्मीदें बहुत थी, हर सेक्टर को उम्मीदें थी, चाहे वो करदाता देश के हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो तमाम वो सेक्टर्स हों जो उस उम्मीदें लगाए बैठे थे इस अंतरिम बजट से। लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, न कोई बड़ा ऐलान हुआ, न कोई बड़ी घोषणाएं हुई। हाँ, दिखाई दिया तो मोदी सरकार की वो उपलब्धियां जो उन्होंने बीते 5 साल में या फिर 10 साल में हासिल की हैं। यानी कह सकते हैं कि 2014 के बाद देश में विकास की धारा बही है। इस पूरे बजट को देखें तो भावार्थ यही समझ में आता है कि निर्मला सीतारमण ने जो चीजें समझाने की कोशिश की, जो चीजें बताने की कोशिश की, वो यही थी। फिलहाल पुराना टैक्स स्लैब क्या है वो आप जान लीजिए। 3 से 6 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स लगता है। उसके बाद 6 से 9 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% टैक्स लगता है। तो 9 से 12 लाख पर 15% टैक्स है। तो वहीं 12 से 15 लाख की इनकम पर 20% का टैक्स लगता था। इसमें बदलाव की उम्मीदें थी, एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले 1 दशक में आई है, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। हमारी 4 जो जात प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में है, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे गरीब, हमारे अन्नदाता, उनके पूर्ण रूप से ऊर्जावान होने के आधार पे ही भारत आगे बढ़ेगा। और जो नए नए कीर्तिमान हर एक क्षेत्र में हमने स्थापित किए हैं, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, एक एक क्षेत्र में हमारे नौजवानों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, भारत अब आगे बढ़ चुका है। यही समय है, सही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही समय है, सही समय है। अभी आप केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनको आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि बहुत ऐतिहासिक बजट है। लेकिन इसमें ऐतिहासिक क्या था ये जनता समझती होगी बेहतर कि इसमें क्या कुछ दिखाई दिया इस पूरे बजट में। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जरूर बता रहे हैं कि ऐतिहासिक बजट है और सही समय है, यही समय है। लेकिन क्या सही समय है ये समझ नहीं आ रहा है देश की जनता को। फिलहाल आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना अंतरिम बजट, मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश कर दिया और बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं निर्मला सीतारमण की तरफ से कि जो भी उन्होंने 5 साल में काम किया है मोदी सरकार ने, उस काम को उन्होंने गिनाया। मोदी सरकार की उपलब्धियों को आज देश के सामने रखा, संसद भवन में रखा, संसद की उस नई बिल्डिंग में रखा जहां पर वो पहली बार बजट पेश कर रही थी। तो देश की नई संसद में कोई नया ऐलान नहीं हुआ है, कह सकते हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद थी, बड़े बड़े ऐलानों की उम्मीद थी कि आज बड़े बड़े कहीं न कहीं ऐलान हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उम्मीदें इसलिए और गहरा जाती थी क्योंकि चुनावी साल है, तो ऐसे में लग रहा था वोटरों को लुभाने के लिए, देश की जनता को लुभाने के लिए मोदी गवर्नमेंट और विकास को गति देने वाला और विकसित भारत की मजबूत प्लेटफॉर्मिंग को और ढंग से योजनाबद्ध तरीके से अंतरिम बजट में उसके लिए
बहुत मजबूत स्तंभ तैयार किए गए। विपक्ष कह रहा है कि डिसअपॉइंटेड था, काफी डिसअपॉइंटिंग बजट रहा है। उनकी टिप्पणी में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अब जैसे देखिए युवाओं के लिए फेम योजना है जिससे उनको ई व्हीकल्स की प्रोत्साहन, उस पर कदम उठाए गए हैं, और जो आवास है उसकी गति और बढ़ाई गई है, लखपति दीदी गति बढ़ाई गई है। ये सब सकारात्मक बजट है। असली बजट तो जुलाई में आएगा। इंटरिम बजट में कोई ऐसी बात नहीं। क्या क्या बेनिफिशियल चीजें थी अगर आपको लगा हो या जो बताना चाहिए आप? मुझे कुछ बताना नहीं है, ये तो वही अपना बजट चल रहा है, जो काम में है वो करनी है, ठीक है, चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को फायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े, हमारी यही तो ख्वाहिश है। टूरिज्म बढ़े। G20 में जो आए थे, टूरिज्म की मीटिंग हुई थी कश्मीर में, हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से और लोग आएंगे टूरिज्म में। और अभी बर्फ़ पड़ी है अच्छी, तो स्कीइंग के सीज़न शुरू हो जाएगा, उम्मीद करते हैं वो भी आएंगे। बहुत अच्छा है, वो लखपति बनेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उससे घर और भी आबाद होगा। हम उम्मीद करेंगे कि वो नरम रहेंगी, ये ना हो कि फिर शादियां टूट जाएंगी, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल की हालत तो वैसी हो रही है कि शादी ज़्यादा देर चलती नहीं है। उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे घर चलें, घर आबाद रहें, शादियां आबाद रहें, ये ज़रूरी है। तो फारूक अब्दुल्ला को अभी आप सुन रहे थे, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद से बाहर निकलते हुए। और अभी फारूक अब्दुल्ला को आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये अंतरिम बजट था तो इससे उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। और जिस तरीके से वाकई में उम्मीदें तो नहीं इस अंतरिम बजट से करनी चाहिए, क्योंकि अंतरिम बजट लेखा जोखा ही होता है सरकार का। और प्रधानमंत्री मोदी ने कल इस चीज को क्लियर भी कर दिया था कि इस बजट से खास उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार लेखा जोखा पेश करेगी। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस चीज को भी बाकायदा दिखाया भी कि कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई बड़ी घोषणा नहीं। हाँ, ये जरूर कहा गया कि जब जुलाई में बजट पेश किया जाएगा, पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, तो उसमें जरूर ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। फिलहाल पुराने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पुराना टैक्स स्लैब वही पहले वाला लागू रहेगा। हालांकि 7 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा है। जीएसटी से एक राष्ट्र एक व्यापक देगा और भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। उन्होंने कहा देश में आम लोगों की आमदनी लगातार बढ़ रही है और जो बड़े बड़े ऐलान किए हैं वित्त मंत्री ने, वो हम आपको समझा देते हैं। कुछ मिलेगा और वही इस बजट में हमने देखा। निर्मला जी ने ये भी कह दिया है कि जुलाई में जो हम बजट पेश करेंगे उसमें जो विकसित भारत की पूरी और आपको नजर आएगी। देखिए, मुझे लगता है इसी में सरकार की अहंकार दिखती है। निर्वाचन हुआ नहीं है और ये अपने आप को विजेता घोषित कर रहे हैं। जनता जनार्दन है और कोई भी राजनीतिक दल भारत के जनता से अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो अभी आप गौरव गोगोई को सुन रहे थे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई कह रहे थे कोई सारी उम्मीदें तोड़ दी, अंतरिम बजट में जो उम्मीदें लगाए थे वो चीजें नहीं हो पाई हैं। तो गौरव गोगोई ने किस तरीके से इस बजट को कह दिया कि जनता का बजट नहीं है, सरकार का लेखा जोखा का बजट है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया संसद भवन से बाहर निकल रहे हैं, उनके साथ में किस तरीके से चीजें रखी गई हैं और एक के बाद एक तमाम जो सांसद हैं वो इस भारत सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। आने वाले दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। मेरे दृष्टि से उस बजट की अगर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर मैं मानूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान की बात कही थी, सिर्फ कहे नहीं, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज बजट में 1 लाख करोड़ रुपया की एक कॉर्पस फंड की अनाउंस किया गया। जो संस्था, जो निजी सेक्टर की संस्था, प्राइवेट सेक्टर या इंस्टीट्यूशनल बॉडी
लोन लेना चाहेगा 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देने की व्यवस्था है। उसकी सीधा सीधा लाभ भारत की नई पीढ़ी को, विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो टेक्नोलॉजी की नई दुनिया आ रही है, उसको भारत की नौजवानों में पूरी ताकत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन हो गया है, इनोवेशन एक जन आंदोलन के रूप ले रहा है और ये 1 लाख करोड़ रुपया की वित्तीय व्यवस्था एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया गया है। आने वाले दिनों में भारत एक जिम्मेवार देश के नाते विश्व समस्या की साथ साथ भारत की रोजगार सृजन, भारत की ईज ऑफ लिविंग, भारत में एक चरम सुखद स्थिति तक ले आने के लिए काम होगा। आपके मंत्रालय से दो सवाल है संबंधित सर कि एक जो 1 करोड़ 40 लाख लोगों को, युवाओं को स्किल्ड किया गया है और दूसरी तरफ 390 यूनिवर्सिटी खोले गए हैं पिछले 10 साल में, इसके बारे में थोड़ा जानना। देखिए, PM श्री के बारे में चर्चा हुई है, नए यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा हुई है, नए IIT, नए IIM, ये सारे जो उल्लेख किया गया है ये सब उस दिशा में एक एक कदम है। स्किल इंडिया के तहत 1 करोड़ 40 लाख नई पीढ़ी की लोगों को स्किल, अपस्किल, रीस्किलिंग करने की बात कही गई है। ये आने वाले दिन में और गति पकड़ेगी। इस बजट जिस प्रकार की कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ी है इस बजट में, जिस प्रकार की देखिए 3 नया रेलवे कॉरिडोर की बात कही गई, इसकी सीधा सीधा अर्थ ज्यादा लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा, ज्यादा स्किल मैन पावर लगेंगे, लोगों की जीवन मान में बढ़ोतरी होगा। ये सीधा सीधा कहता है ये बजट मैं अगर एक लाइन पे उसको कहूं, वेलफेयर और वेल्थ क्रिएशन दोनों की संतुलन की ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जादुई करिश्मा है। धर्मेंद्र प्रधान को अभी आप सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे किस तरीके से सरकार ने बजट पेश किया है और सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बीच एक बड़ा बयान दिया है बजट को लेकर। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये बीजेपी की विदाई का बजट है, बीजेपी ने शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है इस बजट से। तो बयान आने शुरू हो गए हैं विपक्षी नेताओं के। तमाम वो नेता जो टकटकी लगाए बैठे थे निर्मला सीतारमण के उस स्पीच पर जो उन्होंने आज संसद भवन में पढ़ी, तो अखिलेश यादव ने कहा है कि ये बीजेपी की विदाई का बजट है और आज शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐसा बजट पेश करके। तो कुल मिलाकर अब अपोजिशन पार्टियों के तमाम नेता जो हैं वो निशाना साधने लगे हैं। तो अंतरिम बजट में कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसकी उम्मीदें पूरा देश कर रहा था। विकसित भारत के लिए जो 4 पिलर रखा गया, किसान, युवा, गरीब और महिला, ये चारों का समावेश था इसमें। अब प्रधानमंत्री आवास में 3 करोड़ 2 करोड़ घर और स्वीकृत करना, लाखपति दीदी SHG ग्रुप में 3 करोड़ की संख्या को निर्धारित करना, ऐसे कई योजनाएं हैं जो दिखाता है कि एक तरफ वेलफेयर भी है तो दूसरे तरफ 3 कॉरिडोर रेलवे का अनाउंस होना तो एक एक्सपेंडिचर भी है। तो ये समावेशी विकास का इससे बड़ा और कुछ उदाहरण नहीं हो सकता। कमेटी गठित करने की भी बात कही गई है आज के बजट में, इस पर क्या फायदा? स्वाभाविक है, अब कमेटी जो गठित हुई है उसकी की चर्चा की गई है, आगे उस पर देखा जाएगा। विरोध कर रहा है, विपक्ष कह रहा है ये बजट देश के लिए नहीं है। पता नहीं, देश में ही तो पास हुआ है, ये लोकसभा देश के अंदर ही है, उनको देश नहीं लगता हो तो मैं क्या करूं। बजट पेश हुआ है विकसित भारत का, क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं करूंगा। बजट में खास कैसा रहा? बजट कैसा रहा आपके? बजट में खास ये जी सर, इधर एक मिनट दोस्त, आप फ्रेम में आ रहे हैं, आप फ्रेम में आप बस हो एक साथ करो ना। हाँ, अभी का जो फिर अभी कर लिया सर, अभी अंतरिम बजट है, लेकिन इतना बढ़िया बजट जो एक दिशा देता है, अगले बार जब रेगुलर बजट पेश करेंगे उस बीच का जो फासला है उसको पूरा करके साथ साथ पूरा 2047 तक विकसित भारत का नींव कैसे रखना है
इतना सुंदर से रखा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं। इतना शानदार अंतरिम बजट जो पेश किया है आज, और कोई सेक्टर छूटा नहीं है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वेलफेयर, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, और जो जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। इतना बढ़िया फाइनेंशियल स्थिति देश का आज मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचाया है कि हम दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट देश बन गए हैं आर्थिक व्यवस्था के मामले में भी। This budget submitted by our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji is a great project. It will strengthen the Viksit Bharat Yatra. It will strengthen and it will cover all sections of the citizens of the country. So this budget is taking care of all the international policies also? Yes, it is all. तो अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद से बाहर निकल रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो संसद भवन से बाहर निकल रहे हैं। संसद में आज अंतरिम बजट पेश कर दिया गया है और सीधे आप देख रहे हैं संसद भवन से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद से बाहर निकले हैं और रवाना हो रहे हैं यहाँ से। वो बजट आज पेश कर दिया गया है, अंतरिम बजट, और जो उम्मीदें लगाए बैठी थी देश की जनता, उन उम्मीदों के हिसाब से इस बजट में कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया है। देश में महंगाई ज्यादा बढ़ी नहीं है, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है। महिलाओं के विकास पर सरकार का पूरा फोकस है। साथ ही उन्होंने कहा महिलाओं को उद्योग लगाने पर सरकार पूरा जोर दे रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अर्थव्यवस्था के लिए हमने कारगर रणनीति बनाई है। परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के जरिए विकास को गति दी जा रही है। तो विनियामक तंत्र को विकसित किया जा रहा है, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां पर कहा, देखने को मिला। और इसके अलावा इकोनॉमिक कॉरिडोर को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 5 साल में When they were in government for 10 years, one would ask, what were you doing for last 10 years? And in fact, nothing much changes has happened. The people of the country are already disappointed. Moreover, if you realize that all the incentives are given to the rich companies, the performance-linked incentives are not going for the really deserving. बड़ी बड़ी उम्मीदों और ऐलान के इंतजार किया जा रहा था। उम्मीदें की जा रही थी कि इस बजट में कहीं न कहीं बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, बड़े ऐलान हो सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार का ये अंतरिम बजट था। इसके बाद चुनाव होना है, तो चुनाव को साधने के लिए, चुनावी कह सकते हैं कि लाभ पहुंचाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े ऐलान और बड़ी बड़ी घोषणाओं की उम्मीद थी। लेकिन इन सभी योजनाओं और सभी बड़े ऐलानों से बजट में पूरी तरीके से परहेज किया गया। कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया इस बजट में जो कह सकते थे लोगों को लुभा सकता हो। चाहे वो टैक्स पेयर्स की बात हो, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, पुराना वाला ही टैक्स स्लैब रहेगा, कोई भी नया बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि ये जरूर कहा गया कि 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं कि मोदी सरकार का पूरा लेखा जोखा इस 2 घंटे की स्पीच में निर्मला सीतारमण पढ़ती हुई दिखाई दी। हालांकि उम्मीदें थी कि किसान सम्मान निधि योजना जो है उसकी धनराशि को बढ़ाया जा सकता है, टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है, लेकिन वो सभी उम्मीदें और सभी बड़ी बड़ी बातें सिर्फ उम्मीदों तक ही सिमट कर रह गईं। ऐसा कुछ भी निर्मला सीतारमण के भाषण में दिखाई नहीं दिया। तो कुल मिलाकर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 6वां बजट पेश किया है और मोदी सरकार के ये अंतरिम बजट था। इससे 2-3 महीने बाद इलेक्शन होना है, उसके बाद जुलाई में फिर से पूर्णकालिक बजट पेश